प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है वो इक्विलिब्रियम है, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस, एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ओवर Arrhenius concept, limitations of Bronsted-Lowry concept, and Lewis acid concept of acids and bases. Let us discuss relative strengths of conjugate acids and bases. According to Bronsted-Lowry concept, the strength of an acid depends upon its tendency to donate a proton, and the strength of a base depends upon its tendency to accept a proton. In other words, a strong acid means a good proton donor, and a strong base means a good proton acceptor. To understand the relative strengths of conjugate acids and bases. So, according to Bronsted-Lowry concept, the strength of the acid depends upon its tendency to donate a proton, and the strength of the base depends upon its tendency to accept the proton. In other words, we can say a strong acid means a good proton donor, and a strong base means a good proton acceptor. Consider the ionization of hydrochloric acid in water. So HCl यानी कि hydrochloric acid has a strong tendency to donate a proton. Therefore, it is a strong acid, but its conjugate base, chloride anion, in the aqueous solution has very little tendency to accept a proton. Therefore, chloride ion is a weak base. Thus, the equilibrium lies towards the right hand side. Thus, we can say conjugate base of a strong acid is a weak base. Thus, it is concluded here that a strong acid has its weak conjugate base, and a weak base has its strong conjugate acid. Now consider the dissociation of acetic acid in water. तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है दैट इज ए वीक एसिड, and weak acid has a very little tendency to donate its proton. So that is why in this case the equilibrium lies towards the left hand side, and the conjugate base of the weak acetic acid is acetate anions. Hence the acetate anion is a strong conjugate base because the acetate anion has the greater tendency to accept the proton. Hence the equilibrium lies towards the left hand side. Thus we can say the weak acid has its strong conjugate base, or in other words, the strong base has its weak conjugate acid. Thus, we can say strong acid has weak conjugate base. Weak acid has strong conjugate base. Strong base has weak conjugate acid. Weak base has strong conjugate acid. As we know, an acid is a substance which donates its proton and gives its conjugate base in the aqueous solution, and a base is the substance which accepts a proton and gives its conjugate acid in the aqueous solution. As we know, a weak acid has a very little tendency to donate its proton to a base in the aqueous solution. Hence, a weak acid gives its conjugate base which has the greater tendency to accept the proton. Hence, the equilibrium lies towards the backward direction. Hence, a weak acid has its strong conjugate base in the aqueous solution. For example,
Nitrous acid as a weak acid gives its strong conjugate base as nitrite anions in the aqueous solution. Hydrofluoric acid as a weak acid gives its strong conjugate base, that is fluoride anions in the aqueous solution. Similarly, acetic acid as a weak acid gives its strong conjugate base, that is acetate anions in the aqueous solution. Now, as we know, the strong acid has a greater tendency to donate its proton to the base in the aqueous solution. Hence, a strong acid will give its weak conjugate base. So, the weak conjugate base of the strong acid has a very little tendency to accept the proton. Hence, the equilibrium lies towards the forward direction, yani ki towards the right hand direction. For example, here are some examples of strong acids which will give their weak conjugate bases in the aqueous solution, which are weaker bases even than water. For example, perchloric acid in aqueous solution gives its weak conjugate base perchlorate in the aqueous solution. Hydrochloric acid as a strong acid gives its weak conjugate base chloride anions in the aqueous solution. Hydrobromic acid as a strong acid gives its weak conjugate base bromide anion in the aqueous solution. Hydroiodic acid as a strong acid gives its weak conjugate base iodide in the aqueous solution. Nitric acid as a strong acid gives its weak conjugate base nitrate in the aqueous solution, and sulfuric acid as a strong acid gives its weak conjugate base sulfate in the aqueous solution. So these weak conjugate bases of these strong acids are much weaker bases than water. Now, advantages of Bronsted-Lowry concept over Arrhenius concept. So, first advantage is Bronsted-Lowry concept can explain the acid-base reactions in the non-aqueous medium also. For example, an acid-base reaction between hydrochloric acid gas and ammonia gas in gas phase. For example, hydrochloric acid gas as an acid reacts with the ammonia gas as a base in the gas phase to produce ammonium chloride solid. So this acid-base reaction could not be explained with the help of Arrhenius acid-base concept, because according to Arrhenius acid-base concept, an acid is a substance which releases the proton in the aqueous solution, and a base is a substance which releases the hydroxyl anions in the aqueous solution. So, for acid-base reaction, in case of Arrhenius concept of acid-base, there must be aqueous medium in which acid-base reaction takes place. But in case of Bronsted-Lowry concept of acid-base, an acid is a substance which donates the proton, and a base is a substance which accepts the proton. So here in gas phase, the HCl donates its proton to the base ammonia, and ammonia as a base accepts proton from HCl acid. So ammonia acts as a base. So this acid-base reaction can be explained with the help of
Bronsted-Lowry's concept. Thus, we can say all the Arrhenius acids are also Bronsted-Lowry acid, but all the Arrhenius bases are not Bronsted-Lowry bases. Now, second advantage of Bronsted-Lowry concept can explain the basic character of substances like sodium carbonate, ammonia, etc. on the basis that they accept protons. जबकि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया जो है वो बेसिस नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब्सेंट है. थर्ड एडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट इज that Bronsted-Lowry concept is not limited to molecules but also covers even the ionic species to act as acids or bases. Limitations of Bronsted-Lowry concept. Though Bronsted-Lowry concept has wider applications than Arrhenius concept, yet it has some limitations also. The first limitation of Bronsted-Lowry concept is that it cannot explain the reactions between acetic oxides. एस्टिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. एंड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, calcium oxide as a basic oxide react with sulfur dioxide as an acetic oxide to produce calcium sulfate as a salt. The second limitation of Bronsted-Lowry concept is that substances like इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होते हैं जैसे कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एट्सेट्रा, जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है अराउंड द सेंट्रल एटम ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, आर नॉन टू बिहेव एज एसिड्स बट दे डू नॉट हैव प्रोटॉन्स टू डोनेट. जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन डोनर हो. अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक ये एसिड नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटॉन नहीं है. तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इनके स्टिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. The next topic is Lewis concept of acids and bases. According to Lewis concept of acids and bases, an acid is a substance whose molecule or ion can accept a pair of electrons, while a base is a substance whose molecule or ion can donate a pair of electrons. In other words, we can say Lewis acids are electron pair acceptors, while Lewis bases are electron pair donors. A substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electrons acts as Lewis acid. In fact, there is donation of a pair of electrons from Lewis base to Lewis acid to form a coordinate bond between two. Examples of Lewis bases. So, first category of the Lewis bases includes neutral species having at least one lone pair of electrons. For example, in ammonia and amine, the nitrogen atom contains one lone pair, whereas in case of alcohol, water, the oxygen atom contains two lone pairs. Second category of the Lewis bases includes negatively charged species or anions. For example, cyanide, chloride, hydroxide, anions, etc. Examples of Lewis acids. The first category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has incomplete octet. For example, in boron trifluoride, aluminum trichloride, ferric chloride, the central atom has only 6 electrons around it. Examples of Lewis acids. तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट.
फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अब इनमें क्या है कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, इनमें जो सेंट्रल एटम है कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल के, उनके अराउंड जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो जनरली जो आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जैसे कि आपको पता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो NH2 NP1। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम और बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या और सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये इस कंपाउंड का जो ये मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जैसे कि एल्यूमिनियम की जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 3s2 3px1 और फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद 3s से इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। तो एल्यूमिनियम के जो हैं एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाती है 3s1 3px1 3py1, और जब किसमें एक 3p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहता है यानी कि एम्प्टी रहता है। अब ये जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं एल्यूमिनियम के, prior to bonding these undergo hybridization, और ये 3 इक्विवेलेंट एनर्जी के और इक्वल साइजेस के 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो 3 क्लोरीन एटम के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं एंड अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से जो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 3 क्लोरीन एटम्स के साथ, और अराउंड द एल्यूमिनियम देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन एटम्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और एक जो है एल्यूमिनियम का 3p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रह जाता है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट 3p ऑर्बिटल है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड 3p ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम क्लोराइड molecule is neutral but electron deficient and acts as Lewis acid. Second category of simple Lewis acids includes simple cations which act as Lewis acids. All cations are expected to act as Lewis acids since they are deficient in electrons. However, cations such as sodium, potassium, calcium ions, etc. have a very little tendency to accept electrons, because the ratio between the charge to the size of the cation is very low. So due to low polarizing power, these have a very little tendency to accept electrons, while the cations like proton and cations of d block elements etc. have a greater electron accepting tendency and therefore act as Lewis acids, because the charge to size ratio in such cations is very high. So due to very high polarizing powers, so these cations like proton or the cations of d block elements have very high polarizing power, hence these act as Lewis acid। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट है सिल्वर, उसका जो मोनोवैलेंट कैटाइन है सिल्वर मोनोवैलेंट कैटाइन, तो ड्यू टू इट्स वेरी हाई पोलराइजिंग पावर ये क्या करता है कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है टाइन। यानी कि यहाँ पर जो है सिल्वर जो कैटाइन है
वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विद 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर मोनोवेलेंट कैटायन इज 2। सो यहाँ पर जो है सिल्वर जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 2 अमोनिया मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए सिल्वर कैटायन जो है दैट एक्ट्स एज लेविस एसिड and each ammonia molecule by donating its one lone pair of electrons to the silver cation acts as electron pair donor, hence it is a Lewis base. Third category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has empty d orbitals. The central atoms in these molecules can expand their outer octet by accepting electrons from Lewis bases. For example, the molecules such as silicon tetrafluoride, stannic tetrachloride, phosphorus pentafluoride, etc. act as Lewis acids. The third category of Lewis acids includes molecules in which the central atom has empty d orbitals. यानी कि थर्ड कैटेगरी के लेविस एसिड्स वो हैं जिनके मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में सिलिकॉन सेंट्रल एटम है जो पी ब्लॉक के ग्रुप 14 में थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है और ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np2। अब सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड में आता है ग्रुप 14 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो सिलिकॉन की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। सो ग्राउंड स्टेट में सिलिकॉन की बैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2 और इसमें 3d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है और एक 3p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में क्या हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से शिफ्ट हो जाता है वैकेंट 3p ऑर्बिटल में और इस तरह से इन एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन की जो फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है बैलेंस सेल की 3s1 3p3 3d0, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिलिकॉन एटम में 1 जो है हाफ फील्ड 3s ऑर्बिटल है और 3 जो है हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल है और वैकेंट 3d0 है। सो prior to bonding with the 4 फ्लोरीन एटम्स, तो सिलिकॉन के जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं दीज अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इस तरह से ये सिलिकॉन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है विद 4 फ्लोरीन एटम्स। इस तरह से सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की ज्योमेट्री एंड शेप है टेट्राहेड्रल और जो सेंट्रल एटम सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स the silicon tetrafluoride can accept the electron pairs from the Lewis bases. Hence, silicon tetrafluoride acts as Lewis acid. For example, जब सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जो है रिएक्ट्स विद 2 फ्लोराइड एनाइंस, अब जो फ्लोराइड एनाइंस हैं इनमें ईच फ्लोराइड एनाइन हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और ईच फ्लोराइड एनाइन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सिलिकॉन के वैकेंट 3d ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। हैंस ईच फ्लोराइड एनाइन forms one coordinate bond with the central atom silicon in silicon tetrafluoride and 2 fluoride anions form 2 coordinate bonds with the central silicon atom in silicon tetrafluoride and hence the central atom silicon undergo sp3d2 hybridization and transforms into hexafluorosilicate complex divalent anion whose geometry and shape is octahedral. So we can say here silicon tetrafluoride as the acceptor of electron pairs acts as Lewis acid and the fluoride anion as the donor of electron pair acts as Lewis base.
The fourth category of Lewis acids includes molecules in which atoms of dissimilar electronegativities are joined by multiple bonds. For example, in carbon dioxide molecule, the central atom carbon is bonded with each oxygen atom by double bond, and the electronegativity of oxygen is greater than the central atom carbon atom. When the electron-rich hydroxyl anion as Lewis base approaches towards the carbon dioxide molecule, the shared pair of electron of pi bond shifts towards the more electronegative oxygen atom of carbon dioxide molecule, and the 2p orbital of central carbon atom of carbon dioxide molecule becomes empty, and the hydroxyl anion as a Lewis base donates its lone pair to the vacant orbital of central carbon atom of carbon dioxide molecule and transforms it into bicarbonate anion. So, the carbon dioxide molecule acts as Lewis acid and the hydroxyl anion acts as the Lewis base. Let us discuss limitations of Lewis concept. The Lewis concept of acids and bases is more general than Arrhenius as well as Bronsted-Lowry concepts, yet it has several drawbacks. Number 1. Lewis concept is too general and includes all the coordination compounds and coordination reactions. This, however, may not always be true. इसका मतलब हुआ कि लेविस कंसेप्ट के मुताबिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनके जो कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस हैं वो भी एसिड बेस रिएक्शंस हैं, जबकि एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड टेक प्लेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जबकि ये जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस हैं दीज आर स्लो. सो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनके कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस को एसिड बेस रिएक्शंस नहीं मान सकते हैं. नाउ सेकंड लिमिटेशन और ड्रॉबैक ऑफ द Lewis concept of acids and bases is that it does not explain the behavior of well-known protonic acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, etc., which do not form coordinate bonds with bases. Therefore, these are not regarded as acids according to Lewis concept. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में जो सब्सटेंस जो हैं वो प्रोटॉन डोनर्स हैं. दो सब्सटेंसेस आर रिगार्डेड एज एसिड्स. लेकिन लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में जो सब्सटेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं एंड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दो सब्सटेंसेस आर रिगार्डेड एज एसिड्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्हेनियस एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड्स हैं वो प्रोटॉन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं जिनको लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस जो है वो एसिड नहीं मानता है. थर्ड ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज दैट it does not explain the relative strengths of acids and bases. The fourth drawback of the Lewis concept of acids and bases is that acid-base reactions of coordination compounds are slow. Hence, it does not fit in the acid-base reaction concept. क्योंकि जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, यानी कि वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिएक्शंस हैं दीज आर स्लो. हैंस दिस concept does not fit in the acid base reaction concept. The fifth drawback of the Lewis concept of acids and bases is that the catalytic activity of many acids is due to presence of proton. Since a Lewis acid need not contain hydrogen,
Therefore, many Lewis acids will not possess catalytic property. So, thank you.